बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बरसात के बाद सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। क़रीमाबाद चौरंगी पर कई घंटों से ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंसेस में भी मरीज बेहाल हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासिर है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इक़दाम के बारे में बताऊं तो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कराची में बरसात के बाद सड़कों की हालत इंतहाई खराब हो गई है। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासिर है। कईमाबाद चौरंगी पर जो है कई घंटों से भी जो है ट्रैफिक जाम है, जबकि अतराफ की जो इशारा है जिसमें कोरंगी जो जाने वाली जो इशारा है वो भी जो है बंद हो गई है, क्योंकि मली नदी का पानी जो है वो ऊपर की जानिब आ गया है, जिसकी वजह से वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है वो कईमाबाद चौरंगी की तरफ है, जिससे कई घंटों से जो है ट्रैफिक जो है जाम दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से जो है एम्बुलेंस में जो मरीज हैं वो इंतहाई परेशान है, चीखो पुकार जो है इनकी जारी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस और शहरी इंतजामिया के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल ने पड़ाव कर लिया है। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बायस शहर की कई सड़कें, दरिया और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तेज बारिश के बायस मलीद नदी में ओवरफ्लो की वजह से कोरंगी कॉजवे पर कई गाड़ियां फंस गईं। नदी में डूबने वाले शख्स को निकाल लिया गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मानसून का चौथा स्पेल शहर कायद पर काली घटाओं का राज। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने शहर में जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश की जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक PAF मसरूर बेस 44, यूनिवर्सिटी रोड 43, औरंगी टाउन में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लियारी, किमाड़ी, जिना टर्मिनल, मलीर, गोलीमार, जिला वस्ती, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कई इलाकों में सड़कें, दरिया और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई इलाकों में कीचड़ के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई, जबकि कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। बारिश के बायस मलीर में ओवरफ्लो की वजह से पानी कोरंगी कॉजवे की सड़क पर आ गया, जिसके बायस सड़क बंद हुई और कई गाड़ियां फंस गईं। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके मलीर नदी में डूबने वाले एक शख्स को निकाल लिया। इधर महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 15 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि बारिशों का सिलसिला 18 या 19 अगस्त की दोपहर तक जारी रह सकता है। आगे बढ़कर बात करें, कोरंगी कॉजवे नदी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तीनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईदी फाउंडेशन ने कश्ती के जरिए तेज पानी के बहाव में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। मली नदी में भी तोग़यानी है और बंद नंबर 5 के करीब फंसे 2 अफराद को भी बचा लिया गया। ईदी बहरी खिदमात की टीम ने नदी में फंसे अफराद को निकाला है। सुबह से अब तक मलीर नदी के मुख्तलिफ पॉइंट से 40 से 45 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने आज सुबह से अब तक होने वाली बारिश के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश सदर में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह 11 बजे तक होने वाली बारिश के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सदर में बरसी, जहां 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ओल्ड एयरपोर्ट में 4.2 मिलीमीटर, फैसल बेस में 7 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद सादी टाउन में 6.5 मिलीमीटर, DHA 3.4 मिलीमीटर, केमाड़ी में 7 और मसरूर बेस में 9.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन मोमार में 2.6 मिलीमीटर, जबकि कोरंगी में 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में कहीं मुतलका हुकाम पानी की निकासी में मसरूफ, तो वहीं सदर के इलाके निकल रोड पर जमा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी, बुलटन मार्केट से जो ऐवान सनत और तिजारत आने वाला रोड है, मेरे कप में देख सकते हैं कि ये रोड निकल रोड कहलाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सूरत ये कि बारिश के बाद पानी जमा है। सीवरेज के निज़ाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बारिश की पानी की निकासी के लिए यहाँ पर जो मुताल्लिका महकमों का जो अमला है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पानी जमा होने की वजह से जो लोगों को जो है सफ़र करने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। चूँकि ये सदर का इलाका है, सदर चूँकि तजारती हब है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो होल सेल की और रिटेल की दुकान
दुकानें भी मौजूद हैं, ख़रीद व फरोख्त का बड़ा मरकज़ है, लेकिन यहाँ पर लोगों को इस वक्त शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस पानी की वजह से। चूँकि शाम का वक्त है तो शाम में जब लोग घरों को जाने के लिए निकले हैं तो उनको इस वक्त इस पानी में से गुजर के जाना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मोटरसाइकिल सवार मौजूद है। ये बताएं कि आप कितनी परेशानी है इस पानी में से गुजरने की और क्या खौफ महसूस करते हैं जब गुजर रहे होते हैं? सर बात असल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा कराची का कारोबारी इदारा, यहाँ से बिज़नेस होता है, पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तमाम चीज़ें यहाँ से होती हैं, लेकिन यहाँ का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह गड्ढे खुले हुए हैं। अभी लास्ट मुहर्रम में इन लोगों ने सफाई वगैरह के इंतजाम किए थे, उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता। मुहर्रमों से पहले सफाई के इंतजाम कोई नहीं हुए थे, मुहर्रम के दरमियान जुलूस की वजह से सिर्फ इन्होंने साफ़ किया था। उसके बाद आप हालत देख सकते हैं, सिर्फ एक शारा की नहीं, पूरे कराची का इस वक्त यही हाल है। जगह जगह गड्ढे खुले में, मेरे ख्याल से हर मोटरसाइकिल या गाड़ी सवार को बहुत खतरा है। 10-15 मिनट का रास्ता घंटे सवा घंटे में तय हो रहा है, बड़ी परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिल सवार जिनका कहना यह है कि पानी जब जमा होता है तो उनका जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। और इस वक्त सूरत ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो मेहनत कश तबका है वो भी इस वक्त इस पानी में से गुजर रहा है, जिसको अपनी गाड़ी गुजारने में शदीद दिक्कत का और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुतल्लिका महकमे जो है वो हमने देखा है कि मुख्तलिफ हिस्सों में वो पानी की निकासी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सदर जो कि तजारती हब है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तजारती सरगर्मियाँ हम रोज़मर्रा देखते हैं कि उरूज पर होती है। तमाम अब जो है वो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो ताजी तबका दुकानदार हैं, फिर शहरी हैं, उनको वो बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वारिस शाह रोड PCHS ब्लॉक 6 का दौरा किया है और बारिशों के बाद निकासी आब की सूरत हाल का जायजा भी लिया है। इलाका मकीनों ने निकासी आब की सूरत हाल बेहतर ना होने की शिकायत की है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, दौरे से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी देखें, PCHS ब्लॉक 6 के इलाका मकीनों ने निकासी आब की सूरत हाल बेहतर न होने के हवाले से ये शिकायत की थी। इसी सूरत हाल को जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दौरा किया और निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से नजमी आलम और दिगर जो मुतल्लिका इदारों के अफसरान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वारिस शाह रोड से मुतसिल नाले और निकासी आब के निज़ाम को फौरी बेहतर करने के हवाले से हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहरियों की शिकायत पर ब्लॉक 6 PCHS पहुंचा हूँ, शिकायत का जल्द अज जल्द अदाला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की एक बार फिर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि बारिशें हो रही हैं, सड़कों और गलियों का बुरा हाल है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ वीडियो बनाने में मसरूफ हैं। मजीद इनका क्या कहना था जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश के बाद शहर के बुरे हाल पर अमीर जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि कराची की सड़कें और गलियां तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, हुकूमत खामोश है और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर वीडियो बनाने में मसरूफ हैं। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, बड़ी बड़ी सड़कों पे भी पानी है और अंदर की सड़कों और गलियों का बुरा हाल है। ये जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, पार्टी के तर्जुमान हैं, ये सिवाय इसके कि वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वो काम इनका नज़र आ रहा है। हाफिज नईम ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI माफियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग दूसरे मुल्कों के नेशनल हैं वो हकीकी आज़ादी का नारा क्या लगाएंगे, लेकिन नून लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, माफिया को सपोर्ट कर रही थी। बड़ी बड़ी जागीरें रखने वाले हुकूमत में भी होते हैं और अपोजिशन में भी होते हैं और इन सब चीज इनका इकट्ठ है और उसकी वजह से इन पर टैक्स नहीं लगता। ये अंग्रेज के गुलाम हैं, इनसे हकीकी आज़ादी कैसे हासिल होगी? तो नारे लगाने से आज़ादियां नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मजीद कहा कि उनकी जमात जश्न आज़ादी शहर के 250 मुकामात पर जोश व जज्बे से मनाएगी, जिसके बाद हुकूक की बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। कैमरामैन इमरान AK के हमरा जुनेद फरोज, सिटी 21। शहर कायद में बारिश के बावजूद जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चों ने जश्न मनाने के प्रोग्राम बना लिए हैं। कोई सब्ज हिलाली झंडा लहराएगा तो कोई सी व्यू पर आतिशबाजी का मुजाहिरा देखेगा। इस बारे में तफसीलात जानेंगे महमूद रियाज की इस रिपोर्ट में।
शहर कायद में मुसलसल बारिश भी आजादी का जश्न मनाने में कोई रुकावट न डाल सकी। बरसात से शहरियों को मुश्किलात तो जरूर है, मगर कराची वालों की वतन से मोहब्बत इससे कहीं ऊपर है। कौम के मुस्तकबिल बच्चे भी जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। नन्हे मेमार भी आजादी की कदर कीमत से बखूबी वाकिफ हैं। कहते हैं कि वतन से बढ़कर कुछ नहीं। मैं तो माशाल्लाह खूब इंजॉय करता हूँ अपने मम्मा पापा के साथ और दोस्तों में मज़ीद ज़्यादातर, और मैं माशाल्लाह बहुत घूमता फिरता हूँ। और मैं पाकिस्तानियों को भी यही जवाब कहना चाहता हूँ, यानी कि आप लोग खूब इंजॉय करें। हमारे मुल्क का माशाल्लाह इतना बड़ा दिन है। ऐसे ही बस दोस्तों के साथ चले जाते हैं कार शोज़ पे, और बहुत से लोग ट्रैक पे निकलते हैं। अच्छा। गाड़ियों पे। पूरी कौम 75वां जश्न आजादी मना रही है और हर पाकिस्तानी की दुआ है कि हमारा मुल्क सदा यूं ही आबाद रहे। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं। Patrick's High School and Secretary, Catholic Board of Education, Board of Governors of the Catholic Board of Education, principals of schools in Karachi, Mehdi, Saab, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed a wonderful way of spending Independence Day Eve along with religious minorities, and I'm really grateful to the Catholic Board of Education for organizing this event, and I'm really honored to be here today. One link that you missed, I guess, fair enough. I started off my education in Hyderabad at St. Bonaventure's High School. So the role of the minorities in nation building in Pakistan, there can't be a better example than me. As I said, I went to St. Bonaventure's High School, came to Karachi, went to St. Patrick's High School. From here I went to a college sponsored by or built by a Hindu philanthropist, Maryam, and went to university built by a Parsi philanthropist, Nadarja Jalsa Dinsha. And this is not just my story. I was just sitting down with Principal De Silva, and we counted. There have been 6 prime ministers of Pakistan gone to Catholic schools, 2 presidents, including Mr. Asif Ali Zardari. Prime ministers, obviously you've mentioned Shaheed Mohtram Benazir Bhutto was one of them. The current Prime Minister of Pakistan also went to a Catholic school in Lahore. We've got 6 chief ministers, 4 from Sindh, me being one of them, who are products of Catholic schools. I was counting at least 2 chief justices that I remember, 2 chiefs of army staff, and a chief of air staff. So the contribution of Catholic Board of Education, or for that matter, contribution of schools and educational institutions formed by Parsis, have come a long way in making what Pakistan is today. And for this very reason, I'd like to give you a few quotes of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And one quote I'd recently found out, and I actually tweeted it on the 11th of August, the Minorities Day, and I'd not come across that before. I found this quote and I wanted to quote it on the Minorities Day, and I want to repeat it here today. And I quote the Quaid-e-Azam, and he said, Pakistan, which symbolizes the aspirations of a nation that found itself
in a minority in the Indian subcontinent cannot be unmindful of the minorities within its own borders. And both my colleague Gyanchand and Sardar Shah spoke about how we value minorities in this country. And I'd also like to give one other quote from Quaid-e-Azam, which he gave at a press conference in New Delhi on 14th of July 1947, before the birth of Pakistan. And he said, minorities, to whichever community they may belong, will be safeguarded. Their religion of faith or belief will be secure. There will be no interference of any kind with their freedom of worship. They will have their protection with regard to their religion, faith, their life, and their culture. They will be in all respects the citizens of Pakistan without any distinction of caste or creed. And we do value our minorities, and especially the government of Pakistan People's Party. We've had the honor, as we told you, we've had people elected, members of the assembly elected on general seats. Gyanchand Israni right here is an example. He's elected from an area where the dominant majority is Muslims, but they chose him as their representative, and he's representing their constituency here, and he's a member of the provincial cabinet. We've got a member of the National Assembly who's a Hindu, So not only in politics, but in other areas, the minorities have contributed. May it be, as I said, but an Olympian, I believe a hockey player who was a Christian, and he won the gold medal before even Pakistan was formed in 1936. I've forgotten his name. Paul Fernandez. My friend, my classmate Leonard comes to my rescue here. Being here on Independence Day, as I said, is an honor. I remember these streets, and I'll be very candid. This is the first time I've been inside St. Joseph's College. Otherwise, I would be roaming around the streets outside. That's another first for me here today. I see both Leonard and Mervyn smiling at that. So, thank you for inviting me here today. Thank you for this wonderful evening. It's a great way to honor our country. It's a great way to remember the sacrifices of our elders when they formed this country. And it's a great way of telling our future, spending the Independence Eve in an educational institution, tells our future generations of the sacrifices that our elders have made, and make them realize that this country is the future they have given. This country has given me everything. The St. Patrick's motto, if I can pronounce the Latin correctly, was "Per aspera ad astra," to the stars with hardship. I've reached the stars. I'm grateful to Almighty Allah for that. The hardship has been of all my teachers who worked hard to mold me into what I am today. And I do remember all my teachers this day on Independence Day. So once again, I'm grateful for inviting me here today. I'm grateful for this wonderful evening that the Catholic Board of Education has arranged for us. I'm grateful to the Diplomatic Corps, the Consul General, the Ambassador of Italy, the Consul General of Germany for joining us here on our Independence Day. And inshallah ta'ala, we will soon see Pakistan reach 100 years in 2047. And let's work hard to make Pakistan a country to be proud of, and we are proud of our country, a country which the world will reckon, and Pakistan at 100. That is our current goal. 25 years from now, inshallah ta'ala, we'll make Pakistan a country where our future generations will be proud of living, where they'll get all the opportunities. Once again, thank you very much. Pakistan Zindabad.
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्कद की गई थी सेंट जोसेफ कॉलेज में, जहाँ 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीब थी जिसमें वज़ीर आला सिंध खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताते हैं कि सेंट जोसेफ कॉलेज में ये 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्कद की गई।